Good morning, students. Today we will see Business Studies, chapter number 1, Nature and Significance of Management. Next topic is level of management. As we have studied earlier, what is management, objective, functions, characteristics, many things we have studied in earlier. Now, today we will study about levels of management. Levels means different steps where people are staying and they are planning for the benefits of organization. Levels are being divided into 3 categories: top level management, middle level management, lower or supervisory level. Here, top level management, we will study about top level management. The topmost authority who takes frame policies, who make frame policies, organizational goals, strategies. They do different plannings, and that plannings help the organization for growth. Here, the first point has mentioned that framing policies, organizational goal and strategies. I would say that every organization has a top level management. The top level management does planning according to the market, according to customer needs, according to the demand of the market. Whatever they plan in the benefits of organization. They are the framers, they make a strategy according to the company's goal. Now, maximum authority, yes, it is maximum authorized. They are having full-fledged independence to make a different kind of strategies and make it implemented by the others. Next part is face of the company. As you know that Reliance, if I would say Reliance, your mind will say that Reliance is about of Anil Ambani, Mukesh Ambani. The name which has been showcased with that company is considered as face of the company. I would give the example as chairman, CEO, then board of directors. These people are the responsible ones to make policies for the organizational benefits. Next topic is middle level. Middle level is the level where the two-way communication is adapted. That's why the point has mentioned link between top and the lower level. These are the managers who are the interlinked between top level managers and the lower level managers. What they do, they interpret the policies which are being made by the top level managers, and then they make necessary availability resources and they provide to the lower level ones, and then lower level ones will adapt that thing and make it possible to improve more and more. That's why it has been mentioned the interpretation of the policies and ensuring availability of necessary things. जो भी जरूरत वाली चीजें हैं वो सबको वो ढूंढते हैं, बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज बना के फिर लोअर लेवल पे दे देते हैं और लोअर लेवल फिर नीचे वर्कर्स को दे देते हैं, वर्कर फिर अकॉर्डिंगली काम करते हैं. नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग पर्सन. These are the main frame where the people is always encouraging other workers to work more harder and harder. Middle level manager normally makes the strategy, whom to give the responsibility, what to give the responsibility, what they will do, how they will do. Everything will be framed according to the policy, and then they encourage the people by giving different kind of we can say incentives, benefits, and then make it motivational speeches and status, everything they can give, and in the end they make the work done by the other. As we have studied, management is the things which are to be done from the others. We have to make the people work according to the organizational goals and achieve it. I have an example: sales head manager, production head manager. I have given this two examples because sales manager has a certain targets. It has been given by the top level manager. This case, sales head manager, ultimately what they do, they give the responsibilities to the lower level management and make it certain targets to achieve in time. And then the lower level will go further with their workers making the targets and incentives. Next point is lower or supervisory level. Ultimately, the managers who are in the lower category, which are considered as supervisor, clerks, foremen, etc., are the persons who are taking care of the lower level management and workers' relationship. Here,
safety of worker is essential for the level of this kind of lower level people who handle situations very carefully. They make sure that the environment where people are working, it has a safety. The next part is healthy environment. There should be a hygiene environment where people work properly and they get all kind of benefits which are being framed by company. Next is welcoming employee suggestion. How if the worker is working in a machine and he found certain mistakes in that machine or problems, he can go directly to the supervisor and give a suggestion that this machine can be changed or it can be modified for the good production of a product. Next part, I would say that all three levels are working interlinked. Interlinked means they are having different roles, different models and status, but their main objective is to achieve goals. Okay. As just earlier we have seen levels of management. Now the next part is functions of management. There are 5 main topics over here. I will go very short as you have already this kind of 5 chapters you will be having in further lectures. So in functions we are having 5 categories right now: planning, organizing, staffing, directing and controlling. This 5 circle in a circle of function is very important for a business. Any business has to follow these 5 things very essential. In the end, the 6th point is also been there, that is coordination. The coordination between all these functions is essential for the perfect business. So we'll start the first topic as known as planning. Planning means you have to think in advance what to do, when to do, how to do, where to do, and who can do. Everything is to be planned accordingly. Example, if I am going for business, what kind of business I have to do? Where to do, which location I have to do, with the target of which customer will be purchasing my product. Everything has to be planned accordingly and it has to be in well advance. पहले से ही प्रिपेयर करके रखना कि आपको क्या क्या बेचना है, कैसे बेचना है, किसको बेचना है, कौन खरीदेगा, सब टारगेट करके आपको प्लानिंग करनी है. Next part is organizing. After planning, the next step is organizing. Organizing means the things which are essential for the business, it has to be arranged by the manager. हर चीज को अरेंज करके रखेगा कि कौन से मशीन, कौन से यूनिट, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा पर्सन, कौन सा काम करेगा. हर चीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है. जैसे अभी से पहले हमने लेवल देखा था, तो लेवल के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है फ्रेमिंग करना, मिडिल लेवल का इंटरप्रीट करके लोअर लेवल तक पहुंचाना, और लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि लोगों को, जो वर्कर उनके पास काम कर रहे हैं, उनका काम प्रॉपर हो जाए वो देखना. तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है या ऑर्गेनाइजिंग का एक पार्ट है, इसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स the person has to be going with the selection of people that can work in the organization with the effective result. Example सिंपल सा मैं देता हूँ. आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू जो लेने वाला पर्सन है उसको पहले से पता होता है कि कंपनी में कितने लोगों की जरूरत है. जितने लोगों की जरूरत होगी उसी हिसाब से वो वहाँ पर इंटरव्यू शेड्यूल करता है. उसके अंदर वो आपसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, फिर बाद में बहुत सारी चीजें करने के बाद में आपको अपॉइंट करता है. अपॉइंट करने के बाद में आपके एबिलिटी से, आपके नॉलेज के बेस पे या आपके एक्सपीरियंस बेस पे वो आपको जॉब एलोकेट करता है. नेक्स्ट पार्ट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड वेयर द गाइडेंस इज एसेंशियल फॉर एवरी प्रोजेक्ट. हर प्रोजेक्ट में आपको डायरेक्शन देना जरूरी है. जितना ज्यादा आप गाइड करते जाओगे उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट आते जाएगा. मैनी ए टाइम्स यहाँ पर मैनेजर्स का रोल ये होता है कि बहुत सारे डिमोटिवेटेड लोगों को मोटिवेट करना और एनकरेज करना, गाइड करना, प्रॉपर वे में गाइड करना, तो वो अपना काम बहुत आसानी से कर सके. इसीलिए डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके बाद में आता है कंट्रोलिंग. अब कंट्रोलिंग डजंट मीन दैट कि ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करना, नॉट एट ऑल, बट कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है जो प्रोडक्शन या जो सर्कल चलता है उस सर्कल को कंट्रोल कैसे किया जाए. फॉर एग्जाम्पल
क्योंकि आपने यहाँ पे प्लानिंग की थी, तो प्लानिंग करने के साथ साथ में आपने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज के आपने स्टाफिंग की, स्टाफिंग के साथ में डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन के बाद कंट्रोलिंग इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर आप एक टारगेट या आपका जो परफॉर्मेंस टास्क जो होता है वो चेक करते हो। कैसे चेक करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने प्लानिंग जब की थी तब आप 10,000 यूनिट्स 6 मंथ्स में सोल्ड करने वाले थे, लेकिन जब कंट्रोलिंग तक आए तब आपने 8,000 यूनिट सोल्ड किया था 6 मंथ्स के अंदर। तो ये जो यूनिट्स का डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस कहाँ रह गए, कैसे रह गए, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, उसको कैसे टैकल करना है, उस बेस को हम लोग कंट्रोलिंग से चेक करते हैं और चेक करने के बाद में आप फिर प्लानिंग वापस से नए टर्म का शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट बनाया जहाँ पे लिखा है टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। जो हमने लेवल्स देखे हैं उसी हिसाब से प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन हाई अथॉरिटी करती है। उसके बाद में स्टार्टिंग जो होता है वो मिडल लेवल करता है, रिक्रूटमेंट का काम मिडल लेवल करता है। उसके बाद में डायरेक्टिंग का जो काम है वो लोअर लेवल करते हैं। उसके बाद में कंट्रोलिंग को फिर वापस से लुकआउट किया जाता है। होप सो दिस इज इट। In next lecture we will go with the coordination, a small topic. We will complete that topic and we will end the chapter by the end.